बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो हम ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कवर कर चुके हैं। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम। Past perfect continuous is used for an action that began from a certain point in the past and continued up to that time. He had been suffering from fever for many days. He had been suffering from fever for many days. You had been starting. He had been studying since morning. अब जब हमने present perfect continuous tense बनाया था तो हमने वहां पे क्या यूज किया था? Has been, have been. अब जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना रहे हैं तो यहां पे हम यूज करेंगे हैड बिन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सब्जेक्ट प्लस हैड बिन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी हमारे पास कंटिन्यूअस का वर्ड आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी हम यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। It had been raining since morning. It had been raining since morning. He had been speaking. They had been waiting for you since morning. They had been waiting for you since morning. He had been presenting himself for 6 days. He had been presenting himself for 6 days. She had been wasting her time for 2 years. Past perfect continuous tense negative sentences. Subject plus had not been. Had not been. First form of verb with ing plus object. It had not been raining since morning. It had not been raining since morning. He had not been speaking. They had not been waiting for you since morning. He had not been presenting himself for 6 days. She had not been wasting her time for 2 years. Past perfect continuous tense interrogative sentences. Had plus subject plus been फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैड और बीन के सेंटर में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। हैड सब्जेक्ट से पहले एंड बीन सब्जेक्ट के बाद। हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यूज क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ योर सेंटेंस। क्योंकि आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जब भी आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो क्वेश्चन मार्क का यूज कंपल्सरी फॉर यू। अगर आप क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत तस्वर किया जाएगा। हैड ही बीन स्पीकिंग, हैड दे बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। हैड ही बीन प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ फॉर 6 days, हैड शी बीन वेस्टिंग हर टाइम फॉर 2 years। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, had it not been raining since morning. Had he not been speaking, had they not been waiting for you since morning. Had he not been presenting himself for 6 days, had she not been wasting her time for 2 years. अब जब भी आपके पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वहां पे सिंस और फॉर का यूज होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का यूज होता है। इंशाल्लाह ताला इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा हाउ टू यूज सिंस एंड फॉर और डिफरेंशिएट सिंस एंड फॉर। ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।